मैम आपने गाना देखा और संगीत प्रेमी भी लगी आप, अपने जिस तरीके से आपने गाना देखा और आप एक शायद नज़र भी ना आपने झुकाई नहीं है पलक भी। तो कैसा अब आपने अपना आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा इस गाने के पीछे, और जो सैड सीन है पीछे, जबरदस्त कोरियोग्राफी है इसमें, देखने वाली चीज़, और एक इमोशनल है बहुत, कैसा लगा आप? देखिए, मोहित जी ने गाया है तो गाना तो टॉप ऑफ द लाइन होगा ही। गाने की क्वालिटी तो बहुत अच्छी होगी, रिकॉर्डिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और जो खूबसूरत वादियाँ हैं वो तो बड़ा कठिन है बताना, क्योंकि जो मोहित जी ने टोपी पहनी हुई थी वो हिमाचली थी। तो मैं कंफ्यूज थी कि ये भारत का हिस्सा है या मंगोलिया का हिस्सा है। तो वो बहुत सारी जो वादियाँ हैं वो आपस में ऐसी मिलती जुलती हैं, और इसीलिए भारत और मंगोलिया जो रिश्ते हैं वो खून के रिश्ते हैं हमारे, और सदियों पुराने हैं। तो जो अभी बीच में बहुत सारे अलग अलग देश आ गए हैं, वो देश नहीं थे। भारतीय सभ्यता संस्कृति ही दूर तक फैली थी, यहाँ तक कि गेंगेज खान के समय तक भी ऐसा ही था, और इसीलिए उसने भारत को कभी अटैक नहीं किया था। People have to know more about our connectivity, our spiritual connectivity and civilizational connectivity, and how migrations happened out of India. Also, what you see as many countries today, which are our neighbors or extended neighbors, were not there. It was all India. It was greater India. And thus, Mongolia was not just next door neighbor, but Mongolia was an extension of us, and we are extension of them. And through spiritual connections in the past and present, we stay connected. Even today, uh, our stands on most of the international issues are always identical. We have identical issues, we have identical value system, and when what you see at the back end, it's hard to make out whether this is someplace in high altitude Himalaya region, or especially Himachal, because he was wearing a Himachali cap, or it's Mongolia. So very, very beautiful, and enough reason for all of us to travel also, both within the country and outside the country. Right. Okay. So do introduce yourself as well. सर मैं सर शुभम फ्रॉम समाचार न्यूज। सर मोहित सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप हिमाचल से बिलोंग करते हो, जहाँ का लाहौल स्पीति है वो काफ़ी हद तक मंगोलिया से सिमिलर है, तो आपको वहाँ का जो लाहौल स्पीति है और मंगोलिया के कल्चर में क्या सिमिलरिटी दिखी और क्या डिफरेंस दिखा? तो देखिए, जब मैंने पहली बार when I heard Mongolian music, Mongolian, like especially throat singing, that I've also used in my song in the second part, and the tone and the notes that they use in Mongolia, uh, I don't understand the language, but I feel that it's something that I've heard before. You know, also in Himachal Pradesh, in the high altitude regions, and also somewhere in my dreams, because like Kiranji was saying, and Meenakshi was also saying, there's a spiritual connection between the two countries. So I also felt that when I went to Mongolia, I felt like I was amongst my own people, and it's something that I've experienced before. So it was great working with Batajao. He sang beautifully. He played that traditional instrument. Is that called Morinkoer? Morinkoer. Morinkoer. And one thing I really love about Mongolia is that they have the horse as the national animal over there. Yes. And Meenakshi ji also, we love animals and wildlife and nature. And it's always a pleasure. Whenever I've been to Mongolia, it's been beautiful. And it was great working with Batajao and producing this song. And hopefully people love it. And more songs are coming now. Collaboration of mine with Mongolian artists, other Mongolian artists. Hi, this is Seema Dhawan. Hello. Yes, Sima, please. Seema Dhawan from Retro Pop Lifestyle Magazine. So, one question, like, what is the inspiration, and if you can throw some light on the collaboration, any memorable incident, any event like that? Inspiration came when I went to Mongolia for the first time, and when I heard the music over there, and I met the people of Mongolia, and especially when I went outside Ulaanbaatar, and I saw the nature of Mongolia, the steppe region,
and their horses running in the steppe, their camels, and it's really beautiful. That was my inspiration, and after that, I met the musicians. I recorded a few songs in Ulaanbaatar in a studio, and Singh Saab was a great inspiration over there. You know, he facilitated a whole lot of things over there for us, made it really easy for us. And then Bata Jao came to India, and I recorded 2 songs with him in Delhi, in my studio, and the experience was great. You know, then we took Bata Jao to Himachal Pradesh, and the region that we were shooting in, it's above Shimla, and this is India, yeah. But looks like Mongolia, yeah. Certain parts look like that plateau over there. And even Badar was saying that, this reminds me of my home over there. And even the song talks about nature and rivers and how beautiful the land is. And even in the Hindi lyrics, हमने try किया है वही चीज़ बोलने का कि सफ़र में है और कितना खूबसूरत सफ़र है और कारवां है और यहीं बसने का दिल करता है. So that's how it all came about. Mohit, I'd like to say a small thing. आपने जो सॉन्ग देखा है इसका दूर और मुसाफिर जो जर्नी है दूर मंगोलिया में भी एक वर्ड है इसको बोलते हैं एक्सपेंसिव. जहाँ एक्सपेंसिव है जो बना हुआ और एक्सपेंसिव है दूर. और दूसरा एक था अगर आपने यहाँ देखा 2 सितार का मोरिंग होर है. इट्स कॉल्ड हॉर्स फिडल मोरिंग होर. द 2 strings of moring hor and 6 strings of guitar have created a wonderful magic, bringing together the 2 cultures together. And I can say the terrain, as Honorable Minister just mentioned, looks like India. तो लाहौल स्पीति और मंगोलिया एक जैसा लगता है. और अगर आपको याद हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही ड्रेस पहनी थी जब वो सेकेंड टाइम इलेक्शन के लिए प्रार्थना करने के लिए हिमाचल गए. मोहित जी, मेरा सवाल ये है कि मंगोलिया इज़ वेल नोन फॉर द हॉर्सेस, and when our prime minister was there, he was presented the Mongolian horses, and I think that both the ambassadors will vouch for that. शायद आपके म्यूजिक में कहीं Mongolian horses या Indian horses जरूर होंगे, क्योंकि that is what that connect between the 2 countries. Hopefully जो और गाने हैं, मैंने 6 गाने रिकॉर्ड किए हैं जो मेरा कोलैबोरेशन है मंगोलियन म्यूजिक के साथ. तो ये तो पहला है. There are 5 more coming. So there'll be all different kind of beautiful things that you will see from Mongolia. We're also planning to go to Mongolia. His Excellency, we're speaking to him, how it can be facilitated and how it can be done. And so we would also love to shoot some of the songs in Mongolia and some songs in India. मोहित जी नमस्कार, दिस साइड महेंद्र कुमार. सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आखिरी 3 सवाल, ठीक है, और रेलेवेंट टू द सॉन्ग प्लीज. दिस साइड महेंद्र कुमार फ्रॉम ऑर्गेनाइजर पांचली. सर, आपने मंगोलिया से एसोसिएशन अपना रखा, क्यों सिर्फ मंगोलिया, क्यों दुनिया में इतने सारे और भी देश हैं, और अपकमिंग आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है कि भारत के रिश्ते विदेशों के से और मजबूत हो? तो अगला आपका कौन सा देश रहेगा जिसकी कल्चर पे आप काम करने वाले हैं, वहाँ उस देश से जुड़े हुए गाने आप लिखने वाले हैं? देखिए, अभी तो मंगोलिया के साथ नाता जुड़ा है. I've connected with the Mongolian people and the culture and the music. So right now the collaboration is happening with Mongolian musicians, and also because the music and the tones and the sounds of Mongolia have not been really heard by Indian audiences. So when I combine it with a Hindi song, it goes across the world, wherever there are Indians and people who understand Hindi, and they'll be able to hear a Hindi song, a romantic song, along with sounds of Mongolia. So for the audience, it's also something new and fresh and artistic, and also bringing 2 nations together. हेलो, यस सर. सर, आपने मोहित जी ये जो गाना गाया है, ये इसको हम क्लासिकल माने, फोक माने, या हम इसको बॉलीवुड सॉन्ग माने, हम इसको क्या माने, ताकि हम जो लोग हैं वो थोड़े से नोविस हैं. तो जो नोविस होता है वो चाहता है कि मैं थोड़ा डीप डाइव कर लूँ, वो भी आपके सहारे. तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें. देखिए सर, ऐसा है, ना ये क्लासिकल है, ना ये ट्रू फोक है.
ना ये बॉलीवुड है. This is coming together of two different sounds. जो हिंदी का है, that is my way of making a song. Like I started with my band called Silk Route. In fact, I was speaking to someone. My first band, जिसका गाना डूबा डूबा बहुत मशहूर हुआ, उस बैंड का नाम है सिल्क रूट. तो जब मैं मंगोलिया गया तो मुझे सिल्क रूट का याद आ गया, because मंगोलिया is also a major part of Silk Route. तो एक संगीत जो होता है उसमें भाव होता है, इमोशन होता है. वो क्लासिकल है या फोक है या कुछ भी हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है. लिसनर जो होता है वो खाली आप एक तारे पे भी गाना गाइए, अब वो आपको रुला देगा. आप पूरा ऑर्केस्ट्रा के साथ गाइए, वो भी आपको खुश कर देगा. संगीत संगीत है, चाहे वो किसी भी तरीके का. थैंक यू. One last question, please. आप लोग को मालूम नहीं होगा, हमारा जो अम्बासडर MP सिंह साहब है वो मंगोलिया में सबसे पॉपुलर आदमी है. एक तो जो पगड़ी है वो लाल पगड़ी पहनता है, सारा मंगोलिया के लोग उसको फोटो खींचने के लिए इतना उभर जाते हैं. मैं जब गया थी तो वहाँ एकदम सुपरस्टार है, बहुत ही पॉपुलर है. ऐसे तो मजाक भी है लेकिन सच भी है, वो दिल का भी बहुत अच्छा इंसान है. तो बहुत उनको वहाँ लोग मानते हैं, बहुत अच्छा भारत के लिए काम किए हैं. और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मंगोलिया में बहुत पॉपुलर हैं. जैसे कुछ शख्स होते हैं पॉपुलर, दलाई लामा जी बहुत पॉपुलर है मंगोलिया में. तो इसी प्रकार से अभी इस गाने के बाद मोहित चौहान जी भी मंगोलिया में बहुत पॉपुलर हो जाएंगे. तो आपका शुभ जर्नी के लिए बधाई. Last question, and then after that maybe we can play the song one more. Yes, we will definitely. Mohit sir, is there some elements of nostalgia and some seems that there are some nostalgic elements? So if you can. See, it depends on you. It depends on the listener. When people listen to music, they connect music to their life, to their memories, to the events that happen in their life. So, it's for the audience. When you listen to it, you can associate with the song in your own different ways.